Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of Indian Institute of Public Health, Gandhinagar, I, Dr. Medha Vadva, and I, Dr. Komal Shah, faculties from IIPHG, feels our honor and privilege to extend a warm welcome to the inaugural ceremony of the Dialogue on Health Diplomacy. This landmark event focuses on navigating health system challenges, India's health diplomacy in the global south, bringing together thought leaders, policy makers, and visionaries from across the globe. આજનો દિવસ આઈઆઈપીએચજી માટે એક મહત્વપૂર્ણ દિવસ છે, જ્યાં આરોગ્ય ક્ષેત્રે વૈશ્વિક દ્રષ્ટિએ સહકાર અને સંવાદ દ્વારા ભવિષ્યના પાયાની રચના કરવા માટે 10 દેશોના અને ભારતના વિવિધ રાજ્યોના પ્રતિનિધિઓ એકત્ર થયેલા છે. આ હેલ્થ ડિપ્લોમેસી મીટિંગનો ઉદ્દેશ માત્ર વૈશ્વિક આરોગ્યની પડકારોનો સામનો કરવાનો નથી, પરંતુ તેનો સામૂહિક ચર્ચા દ્વારા સકારાત્મક ઉકેલ શોધવાનો છે. આ કોન્ફરન્સના મંચ પરથી થતી ચર્ચાઓ અને સંવાદો આરોગ્ય નીતિઓમાં સ્થાયી પરિવર્તન લાવશે અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે એક નવી આરોગ્ય સહકારની સંસ્કૃતિ ઊભી કરશે. Tonight's gathering symbolizes our shared commitment to fostering collaboration and advancing global health diplomacy. We are deeply privileged to have with us an extraordinary panel of dignitaries and guests whose presence enriches this occasion. Today, we are honored to have representation from over 10 countries and various states across India. I now request Dr. Deepak Saxena, Director, IIPHG, to kindly welcome our chief guest, Shri Bhupendra Bhai Patel, Honorable Chief Minister of Gujarat. માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના દૃઢ નેતૃત્વ, દીર્ઘદ્રષ્ટિ દ્વારા રાજ્યના વિકાસ અને સમૃદ્ધિ માટે અનેક મહત્વપૂર્ણ પ્રયત્નો શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. એમના નેતૃત્વ હેઠળ રાજ્યમાં અનેક યોજનાઓનું અમલીકરણ કરવામાં આવ્યું છે, જે ગુજરાતના દરેક નાગરિકના જીવનમાં આરોગ્યલક્ષી સારું પરિવર્તન લાવવા સક્ષમ છે. We welcome you, sir. I request Dr. Anish Sinha, IIPHG Registrar, to welcome our guest of honor, Shri Rishikesh Bhai Patel, Honorable Minister of Health and Family Welfare and Medical Education, Higher and Technical Education, Law, Justice, Legislative and Parliamentary Affairs. આજે માનનીય આરોગ્ય મંત્રી શ્રી ઋષિકેશભાઈ પટેલના આ મંચ પર આગમનથી કાર્યક્રમને વિશેષ મહત્વ મળી રહ્યું છે. આપના નેતૃત્વ અને માર્ગદર્શનથી અમે આ ક્ષેત્રમાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન અને વિકાસ માટે નવી ઊંચાઈઓ પર પહોંચી શકીએ એવો અમારો વિશ્વાસ છે. We welcome you, sir. I now request Dr. Sanjay Zotpe, President, Public Health Foundation of India, to welcome Shri Rajendra Kumar, IAS, Secretary, Tourism, Devsthanam Management, Civil Aviation and Pilgrimage. We welcome you, sir. I now request Dr. Deepak Saxena, IIPHG Director, to welcome Shri Dhananjay Dwivedi, Principal Secretary, Health, Government of Gujarat. We welcome you, sir. Lastly, I request Dr. Anish Sinha, Registrar, IIPHG, to welcome Ms. Kajri Biswas, IFS, Director of Policy Planning and Research Division, Ministry of External Affairs, Government of India. We welcome you, ma'am. To symbolize enlightenment and wisdom, I now invite all the dignitaries to join us for the ceremonial lighting of the lamp.
A round of applause for our dignitaries on the dais. Thank you, esteemed guests, for this beautiful gesture to mark the commencement of the evening. It is now my pleasure to invite Dr. Deepak Saxena, IIPHG Director, to deliver the welcome address. Dr. Saxena has been a staunch advocate of public health education and research. Respected Chief Guest, Adarniya Chief Minister Sir of State of Gujarat, Guest of Honor and ever helping our Health Minister Shri Rishikesh Bhai Sir, Honorable Ambassadors, Diplomats, High Commissioners from countries representing Global South, dignitaries on the dais, off the dais, delegates and colleagues. On behalf of IIPHG family, it's with great pleasure and pride I extend a very warm welcome to all of you at IIPHG for this dialogue on navigating health system challenges, India's health diplomacy in Global South under track 1.5 health diplomacy, supported by Public Policy and Research Division, Ministry of External Affairs, Government of India. IIPH Gandhinagar is an exemplary example of visionary leadership of our present Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who in 2007, as then Chief Minister, laid the foundation stone. I'm thankful to the leadership of state now also, because in 2015 they had put enough faith on us and has given a university status through a special act of assembly. Since then, we have been offering Masters of Public Health, Master of Public Health and Public Health Nutrition, Master of Hospital Administration, PhD programs and other diploma courses. I'm happy to share that in the recent Gujarat State Institutional Ranking Framework, we were ranked 5-star university and were honored as the first university ranked in research within the state. In the global ranking of public health school across globe, along with our parent organization, we were ranked second best globally. We are interdisciplinary university with a focus on academia, research, capacity building through various short-term training courses. We have been recognized by Indian Council of Medical Research as Center of Excellence for Biomedical Research. We have been recognized by DHR as Best Upcoming Health Technology Assessment Unit. We are also host to various Center of Excellence like Techno Business Incubation Center, supported by DST Government of India, Center of Nutrition, One Health, Non-Communicable Disease, and Hospital Management in name of Qualips. We are very closely working, sir, with Department of Health and Family Welfare. We are closely working with Department of Education, Department of Women and Child Development within the state on various domains of capacity building and policy advocacy. I'm happy to share with you, sir, that we are also independent verification agency for health system strengthening initiative supported by World Bank in the name of Shrestha Gujarat. We are actively engaged and supporting states of Bihar, Uttar Pradesh, Rajasthan, Maharashtra, Madhya Pradesh, and the Central Ministry too. To name few, we have been actively engaged with Government of India in elimination of tuberculosis. In this rapidly evolving scenario of growing concerns on emerging public health challenges and public health per se, collaboration, knowledge sharing, collective action, adequate networking within country as well as the countries of Global South seems to be need of the hour. We have been very actively working with Ministry of External Affairs under ITEC program for capacity building of the partner countries. I'm sure that this 1.5-day deliberation will give all of us enough and more opportunities to tick box all these important domains. The plenaries are thoughtfully crafted with best of speakers from government, international partners, academia, industry, and experts in public health practice. I end up with a quote of Father of Nation, Mahatma Gandhi: the difference between what we do and what we are capable of doing together would suffice to solve most of the world's problems. So let's all seize this opportunity to learn from each other, strengthen our network, and expand our horizons by working together. Thanks again. Jai Jai Garvi Gujarat. Jai Hind. Thank you. Thank you, sir.
We now have the privilege of hearing from our distinguished guests. First, I invite Dr. Sanjay Zotpe, President of Public Health Foundation of India, to address the gathering. Thank you and good evening. Honorable Chief Minister Shri Bhupendra Bhai Patel, Honorable Minister Shri Rishikesh Bhai Patel, honorable guests, distinguished delegates, and invited guests. For me, it's an extraordinary privilege and pleasure to welcome you all for the Dialogue on Health Diplomacy organized by Indian Institute of Public Health, Gandhinagar. Public Health Foundation of India has set up on the initiative of the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, 5 Indian Institutes of Public Health in India. IIPH Gandhinagar was the first institution that was set up. We have institutions at Hyderabad, Bhubaneswar, Delhi NCR region, and Shillong in Meghalaya. Through these institutions, we offer capacity building educational programs, conduct program and policy relevant research, provide technical support and assistance to the state government and Government of India in order to advance the public health agenda for the country. I congratulate IIPH Gandhinagar for collaborating with the Ministry of External Affairs, Government of India, and organizing this particular dialogue, which I firmly believe will provide a platform to facilitate discourse in advancing collaboration and cooperation between the South-South countries. We really need to see that how do we position India globally in advancing dialogue in order to facilitate collaboration between South-South countries and in the context of particularly global health. And I firmly believe that this platform will advance this discourse. I wish the deliberations for next 1.5 days productively and conclusively contributing to advancing the larger global agenda and positioning India at the front. Thank you so much. Thank you, sir. I welcome Ms. Kajri Biswas, IFS Director of Policy Planning and Research Division, Ministry of External Affairs, Government of India, to share her thoughts. Shri Bhupendra Bhai Patel, Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Rishikesh Ganesh Bhai, Honorable Minister of Family Welfare and Medical Education to the Government of Gujarat, Shri Dhananjay Dwivedi, Principal Secretary to the Government of Gujarat, other senior officers of the Gujarat government, ambassadors and dignitaries from the diplomatic corps, luminaries and experts from the field of medical science, distinguished speakers, and today's audience at the inaugural ceremony of the conference on navigating health system challenges, India's health diplomacy in Global South. A very good evening to all of you. At the outset, I would like to congratulate the Indian Institute of Public Health, Gandhinagar, and the Health and Family Welfare Department, Government of Gujarat, for organizing such a well-curated event on a topic of great contemporary relevance and significance. Health diplomacy is a bridge for innovation, resilience, and solidarity, and it connects practitioners and individuals beyond domestic priorities. The world continues to recover from the after effects of the pandemic and faces pertinent issues associated with climate change, food and water insecurity, growing geopolitical conflicts, and challenges such as antimicrobial resistance, zoonotic diseases, nutritional deficiencies, respiratory diseases, and mental health challenges. In its own neighborhood, India has played a transformative role with a combination of aid, trade, and strategic positioning in global health governance. India produces considerable human capital for health with an average of 80,000 new doctors annually. The doctor population ratio in the country stands at 1:836, which is better than the WHO recommended standard of 1:1000. There are about 13 lakh registered allopathic doctors, 36.14 lakh nursing personnel, an approximate 75,000 Indian trained physicians
work in key countries like the United States, United Kingdom, Canada, and Australia. And this is according to 2023, and I'm sure the figures have gone up. And over 60,000 Indian nurses work in the UK, UAE, and Canada. And this, again, is slightly old data from 2019. India has also emerged as the pharmacy of the world by producing affordable medicines and vaccines, where 60% of the world's vaccines are known to be produced here. These factors have contributed to the growing presence of India as a destination for medical tourism, particularly in the South Asian neighborhood. The private healthcare sector in India is also one of the most affordable in the world, while providing world-class services that are often at the cutting edge of medical science, thus attracting patients from all over the world. There were 634,561 foreign visitors as of 2023, about 7.3 million in 2024, coming to India seeking treatment. Additionally, the costs of medical treatments in India are about 60 to 80% less than similar procedures in the US or Europe. India is also known for its traditional medicine and holistic healthcare practices under the Ayush initiative. India has been actively involved in multilateral initiatives on health diplomacy, like the WHO, G20, Quad, the BRICS, and has advocated for reforms and greater representation of developing countries in health policy decisions. At the WTO, India, along with South Africa, is advocating for the TRIPS, or trade-related aspects of intellectual property rights, waiver to facilitate easier access to vaccines during pandemics and ensure certain provisions for the prevention, containment, and treatment of outbreaks, such as suspension of IP protections for the ingredients and manufacturing processes for the production of essential vaccines. During the COVID-19 pandemic, India was amongst the first countries to announce a need for collective action in the Global South. And our initiative included supplying hydroxychloroquine and paracetamol to several countries, while also dispatching rapid response teams to countries like Nepal, Kuwait, and the Maldives. As a part of the Quad vaccine partnership and vaccine experts group, India took the role of bulk manufacturing of the vaccines. With this and Vaccine Maitri initiative, India was able to cater to the vaccine demands domestically and supply 235 million doses to over 96 countries. In September 2024, at the Quad Leaders Summit, the Quad Cancer Moonshot Initiative was announced with the aim to combat cancer in the Indo-Pacific region, beginning with a focus on cervical cancer. Beyond vaccine distribution, India also engages in health sector collaborations, for example, in Africa, where it has helped set up specialty hospitals, provided telemedicine services through the Pan-Africa e-network, and etc. During its G20 presidency, India offered the CoWIN platform as a digital public good to any interested country, and to the WHO through the WHO's CTAP initiative. More than 50 countries have shown interest in the CoWIN platform. During the Voice of the Global South Summit, India launched Arogya Mantri, an initiative to promote India's capability as a first responder during a natural disaster in developing countries by providing medical and necessary supplies. Bhishma, or the Bharat Health Initiative for Sahyog Hita and Maitri, is an outcome of Arogya Maitri, where portable mini cubes filled with essential medicines and equipment are used for rapid deployment in emergencies. In August 2024, the Bhishma cubes were presented to Ukraine. Through Dakshin, which was launched during the second Voice of the Voice of Global South, India promotes its traditional medicine system Ayush and modern healthcare practices. India's healthcare diplomacy has also focused on enhancing capacity building by offering training programs, international scholarships, medical equipment, and establishing standard terminologies in collaboration with WHO for integration into global health practices, and creating an ecosystem with functionaries and ministries at the national and international levels to facilitate health diplomacy.
Looking ahead, India would continue to focus on its preparedness for existing and emerging global health issues and work towards enhancing its initiatives to fill in for the gaps that exist in the healthcare systems. Thank you. Thank you, ma'am. It is now my honor to invite our guest of honor, Shri Rishikesh Bhai Patel, Honorable Minister of Health and Family Welfare, to address the gathering. Good evening. Good evening. आरोग्य कूटनीति परिसंवाद में उपस्थित आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री गुजरात राज्य के भूपेंद्र भाई पटेल साहब, हमारे स्वास्थ्य परिवार कल्याण के प्रिंसिपल सेक्रेटरी धनंजय द्विवेदी जी, सचिव पर्यटन विभाग राजेंद्र कुमार जी, अध्यक्ष पीएचएफआई डॉक्टर संजय जेडपे जी, निदेशक पीपीएनआर प्रभाग कजरी विश्वास जी, निदेशक आईआईपीएच डॉक्टर दीपक सक्सेना जी, रजिस्ट्रार डॉक्टर अनीस सिन्हा जी और साथ में हमारे विदेश से पधारे हुए सब मेहमान और साथ में हेल्थ विभाग और आरोग्य की चिंता करते हुए सभी ऑफिशियल्स। वहां जब मैं एंट्री लिया तब वहां पर एक लाइन लिखी हुई है, आईआईपीएच की नींव हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब जब गुजरात में थे मुख्यमंत्री के तौर पे, तब उनका बहुत बड़ा सपना था आईआईपीएच के लिए और वो सोच भी रहे थे आईआईपीएच को आरोग्य के क्षेत्र में आईआईटी, आईआईएम जैसा एक इंस्टीट्यूशन बनाए। और मुझे गर्व है आज गुजरात में ये संस्था हमारी आईआईपीएच आज पूरे ग्लोब में अपना कर्तव्य दिखा रही है, अपना काम भी दिखा रही है और पूरे देश के अंदर उसका बहुत अच्छा जो मोदी साहब ने सोचा था वैसा ही काम करने में वो सक्षम हो रही है। गुजरात वैसे भी मोदी साहब का यहां पर 2001 में 21वीं सदी में यहां जब मुख्यमंत्री बने तब से हर फील्ड के अंदर सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेके चलते हुए आज देश को भी सभी राज्यों को भी विकास के पंथ पे ले जाने का काम उन्होंने किया है। 2001 में हमारी जो परिस्थिति थी, यहां पर डॉक्टर नहीं थे, आज करीबन 7100 7,100 जितने हमारे एमबीबीएस डॉक्टर गुजरात को मिल सके, देश को मिल सके, ऐसी पोजीशन पे आए हैं। आज पूरे देश के अंदर जो पीजी की सीट, यूजी की सीट, दोनों में बहुत डिफरेंस था। हमारे हर जिले में मेडिकल कॉलेज के लिए मोदी साहब ने जो सपना संयोजा था, तो आज करीबन हर जिले के अंदर हम अगले साल में, आज 40 मेडिकल कॉलेज तो आज भी है, लेकिन जो बाकी छूटे हुए जिले हैं उसमें भी हम मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए जा रहे हैं और हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज। और जो दूर दराज के एरियाज है, शेड्यूल ट्राइब एरिया है, जंगल में रहते हुए लोग हैं, उनके लिए भी स्वास्थ्य फैसिलिटी आज है, उसमें भी बढ़ोतरी करके मेडिकल कॉलेज, मेडिकल हॉस्पिटल बनाने का आदरणीय भूपेंद्र भाई ने भी उसी दिशा में काम करना चालू किया है। और आज जो हमें जो मानक दिए गए थे, माता मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज वगैरह जो 7-8 मानक हमें दिए गए थे, नीति आयोग ने जो दिए थे, उसमें हम खरे उतरने का काम किया है। 2001 में जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति को हम कंटिन्यूसली चेंज करते रहे हैं और जो माता मृत्यु दर है उसमें भी हम अभी 57 पर प्रति 1 लाख हम पहुंच गए हैं और बाल मृत्यु दर के अंदर भी हम 23 पर पहुंच गए हैं, जो कि वो 2001 में 57 था। हर क्षेत्र में अंदर
इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 54% थी, आज 94% तक हम पहुंच गए हैं। बहुत सारे मानकों में जो हेल्थ के लिए है, लेकिन हमारे लिए एक चैलेंज आज भी बहुत बड़ा है। एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, बहुत सारे बढ़ते जा रहे हैं। उसके लिए भी हमने गुजरात के जो 24 के अंदर करीबन 950 जितने 950 जितने हमने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, साथ में 1000 के आसपास प्राइमरी हेल्थ सेंटर, 365 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज, मेडिकल हॉस्पिटल की बहुत सारी श्रृंखलाएं हमने बना दी है। क्यों? कि मोदी साहब जब यहां थे 2012 में, जो अभी पूरे देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को जो फायदा देने वाला स्कीम आयुष्मान भारत का, उसकी शुरुआत भी गुजरात से हुई थी। मां कार्ड करके गरीब तबके के लोगों के लिए यहां पर मोदी साहब ने बहुत बड़ा एक मां कार्ड का आयोजन किया। इसकी वजह से बहुत सारे गरीबों को स्वास्थ्य लाभ मिला, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो मिडिल क्लास थे, कम आए थे, वो उस कैटेगरी में नहीं आ रहे थे। तो उनके लिए भी 2014 में आय की सीमा रखते हुए मां वात्सल्य कार्ड बनाया। आज पूरा देश आयुष्मान कार्ड का लाभ ले रहा है। गुजरात से चालू की गई, शुरू की गई हर एक योजनाएं आज पूरे देश में लागू हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो पूरा सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र दिया था, आज पूरा देश और साथ में गुजरात की तो पहली जवाबदारी है, पहली जिम्मेदारी है कि जो भी देश में हो उससे पहले गुजरात करे। और उसके लिए हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल रात दिन मेहनत करके गुजरात के एक नए मकाम पे ले जाने के लिए पूरी तरह से वो कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आयुर्वेदा और योगा दोनों के लिए भी बहुत सारी नए इनिशिएटिव हम ले रहे हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको कुछ हो इससे पहले योग करो, आयुर्वेदा का सहारा लो और साथ में एलोपैथी सर्विस पे ना जाना पड़े, इसके लिए हमने बहुत सारे इनिशिएटिव हमने गुजरात में लिए हैं। इसके लिए यहाँ पर WHO ने GMTC सेंटर जामनगर में दिया है, 1000 करोड़ की लागत से वो बनेगा। ट्रेडिशनली मेडिसिन जो है पूरे दुनिया की, उसके लिए रिसर्च किया जाएगा और उसका विस्तार किया जाएगा। बहुत सारे काम गुजरात में भी हुए हैं, लेकिन आज देश को भी इसका बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। और हमारा IIPH यहाँ पर जो है बहुत बड़े नए नए इनिशिएटिव लेके, और मैं तो चाहता हूं कि यहाँ से बहुत सारे, ये ऐसा एक स्कूल है जो हेल्थ के बारे में वसुधैव कुटुंबकम की हम भावना रखते हैं। तो पहले हमारे भारत में और साथ में दुनिया के सारे लोगों के लिए यहाँ पर जो हमारी हेल्थ की एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी है, उसके लिए ये फॉरेन डेलीगेट्स के साथ भी सुबह में हमने एक मीटिंग भी की, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन भी किया। वैल्यू ट्रैवल के लिए, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के लिए, मेडिकल टूरिज्म के लिए मोदी साहब ने यहाँ अहमदाबाद असारवाम जो मेडिसिटी है उसके लिए जो प्रयत्न किया था, आज करीबन भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में करीबन पूरा होने के हुए। यहां से हम नहीं रुके हैं, हमने ये पूरे गुजरात को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। साउथ, मध्य, मिडल और साउथ में सौराष्ट्र रीजन, सभी जगह पे यहाँ पर मेडिसिटी का जो निर्माण हुआ है, जितनी स्पेशलिटीज यहाँ मिल रही है, ऐसी ही स्पेशलिटीज हर क्षेत्र में उपलब्ध हो, उसका रोड मैप भी आदरणीय भूपेंद्र भाई ने बनाया है और हम उसमें भी सक्सेस होंगे, क्योंकि हमारे पास विजन मोदी साहब का है, हमारा पथ दर्शन मोदी साहब करते हैं। और यहाँ पर जो वहीवटी ढांचा जिसको एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, वो भी ऐसा अच्छी तरीके से बनाया है कि ऑटोमाइजेशन पे ये व्यवस्थाएं चले। ऐसा जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन बनाया है, गुजरात रुकने वाला नहीं है, गुजरात दौड़ता रहेगा। और 47 से पहले गुजरात देश में अपना शीर्षस्थ वो नेतृत्व प्रदान करेगा, ऐसा गुजरातियों का भी मानना है, युवाओं का भी मानना है।
और जब ये इंडस्ट्रियल दौर चल रहा है, 21वीं सदी का दौर चल रहा है, दुनिया के साथ हम दौड़ना चाहते हैं। केवल ऐसा ना हो कि हम केवल टेक्नोलॉजी इन्वेंट करें, यहां आयात करें, यहां से निकास भी हो, उस दिशा में हमें आगे जाना है। क्यों कि पहले एआई जैसे विषय, रोबोटिक्स जैसे विषय वैज्ञानिक साहित्य में हम पढ़ते थे और फ्रिक्शन साइंस पिक्चर्स थे उसमें देखते थे। आज हकीकत बना है, आज हकीकत बना है 21st सेंचुरी में, और आगे के समय में और भी बहुत सारे जो हमने सोचा भी नहीं है, सोच में ही ऐसे नए बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल रिसर्च भी होने वाले हैं और आने वाला है। लेकिन हम दुनिया के साथ दौड़ेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आप सब फॉरेन डेलीगेट्स आए, उनका शुक्रिया भी मैं मानना चाहूंगा। और साथ में बहुत सारे यहाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होंगे, बहुत सारा कुछ निकल के आएगा। ये भी अमृत कुंभ जैसा ही है। यहाँ पर मनोमंथन होगा, वहां सागर मंथन हुआ था, यहाँ मनोमंथन करके बहुत सारा सत्व यहाँ से निकल के भारत के लोगों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए काम में आएगा। धन्यवाद। Thank you, sir, for your inspiring words. Finally, it is my privilege to invite our chief guest, Shri Bhupendra Bhai Patel, Honorable Chief Minister of Gujarat, to deliver the keynote address. તાળીઓ સાથે આપણે આપણા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રીના વક્તવ્યને સંબોધીએ. મારા એકલા માટે ગુજરાતી કરવું પડે છે એવું છે? કારણ કે અહીંયા બેઠેલા અને ગુજરાતી બહુ ઓછા હશે, ગુજરાતી જેને ખ્યાલ આવતો હશે. भारतीय जाहिर आरोग्य संस्थान गांधीनगर द्वारा आयोजित हेल्थ डिप्लोमेसी पर संवाद कार्यक्रम में हमारे बीच मंच पर उपस्थित मेरे साथी मंत्री श्री ऋषिकेश भाई पटेल, अग्र सचिव श्री धनंजय त्रिवेदी, प्रवासन सचिव डॉक्टर राजेंद्र कुमार, पीएचएफआई के अध्यक्ष डॉक्टर संजय झुड़पे, डायरेक्टर पीपीएनआर श्रीमती कजरी विश्वास, IIPHG के डायरेक्टर डॉक्टर दीपक सक्सेना, रजिस्ट्रार श्री डॉक्टर अनिल सिन्हा, आमंत्रित सभी अतिथिगण, विदेश से पधारे हुए सभी डेलीगेट्स, प्रेस मीडिया के मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारी भारतीय संस्कृति तो सदियों से ही बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की संस्कृति रही है। आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस विचार के साथ अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में गांधीनगर में भारतीय लोक संस्थान स्वास्थ्य संस्थान की नींव रखी थी। आज यही संस्थान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई की दूरंदेशी और भारतीय संस्कृति की इसी विचार मंत्र को विश्व सहित ग्लोबल साउथ कंट्रीज में भी साकार रूप दे रही है। वैश्विक आरोग्य समस्याओं को सुलझाना, गरीबी को रोकना, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना इस हेल्थ डिप्लोमेसी का संवाद का उद्देश्य है। प्राचीन भारतीय संस्कृति की वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरणा लेते हुए आज भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में विश्व मित्र के रूप में उभर रहा है। कोरोना के विकट समय में 100 से अधिक देश में वैक्सीन और मेडिसिन पहुंचाकर भारत ने अपनी विश्व मित्र की भावना को और प्रबल बनाया है। भारत ग्लोबल साउथ देशों के जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने और फार्मेसी रेगुलेशन वर्क में भी सहयोग कर रहा है। आज के समय में स्वास्थ्य संबंधी जटिल समस्याओं बहुत बड़ी हैं। मेरा मानना है कि इसी समाधान में
प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत बहुत ही बड़ी भूमिका निभा सकता है। इस दिशा में आज का यह कार्यक्रम वैश्विक आरोग्य चुनौतियों और उनकी समाधान के तौर पर भारत के बेस्ट प्रैक्टिसेस को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने का माध्यम बनेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में स्वास्थ्य क्षेत्र का पूरे देश में अभूतपूर्व विकास हुआ है। देश के हर नागरिक को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं मिले, उसके लिए देश में निवारक स्वास्थ्य सेवा को प्रोत्साहन, गांवों में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि, शहरों में मेडिकल कॉलेज और मेडिकल अनुसंधान संस्थाओं की स्थापना पर एक साथ काम हो रहा है। इस साल के अंत तक क्षय निर्मूल के लिए भारत में सघन अभियान चल रहा है और गुजरात भी प्रधानमंत्री जी के इस उद्देश्य में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। गुजरात के लिए तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें नरेंद्र भाई के नेतृत्व और मार्गदर्शन और दृष्टि का लाभ पिछले 23 सालों से मिल रहा है। उन्हीं के प्रयासों के परिणाम स्वरूप पहुंच योग्य, न्याय संगतता, खरीदने की सामर्थ्य, गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं राज्य के हर नागरिक को मिल रही हैं। आज राज्य में आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर चिकित्सा कॉलेज और अति आधुनिक हॉस्पिटल्स को मिलाकर 11,000 से अधिक स्वास्थ्य संस्थाएं कार्यरत हैं। भारत सरकार की थिंक टैंक नीति आयोग के सातत्यपूर्ण विकास के लक्ष्य में गुजरात लगातार 2 साल से अच्छे स्वास्थ्य सुविधाओं की श्रेणी में प्रशस्त स्थान पर रहा है। गुजरात आज श्रेष्ठतम आरोग्य बुनियादी ढांचे के साथ मेडिकल टूरिज्म के हब के रूप में भी उभर रहा है। आज विदेश से भी लोग गुजरात में इलाज के लिए आ रहे हैं। गुजरात के UN मेहता का कार्डियक इंस्टीट्यूट में तो अब तक एशिया और अफ्रीका में 1,000 से अधिक मरीज हृदय संबंधी उपचार ले चुके हैं। हेल्थ सुविधाओं को वैश्विक फलक पर ले जाने के लिए राज्य सरकार ने मेडिसिटी को भी विकसित किया है। यह मेडिसिटी राज्य में सभी स्वास्थ्य देखभाल जरूरियात के लिए एक स्थान पर समाधान है। हमारे इन्हीं प्रयासों के कारण आज राज्य का मेडिकल टूरिज्म का विकास दर 33% हुआ है, 33% पहुंच गया है, जो राष्ट्रीय स्तर पर मेडिकल टूरिज्म विकास दर 13% से काफी अधिक है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का यह संवाद ग्लोबल लेवल पर मेडिकल व स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं से जुड़ी सभी चुनौतियों के समाधान पर महत्वपूर्ण विचार विमर्श का मंच बनेगा। अंत में मैं फिर एक बार भारत सरकार, भारतीय लोक स्वास्थ्य संस्थान और देश विदेश से पधारे सभी महानुभावों का आभार व्यक्त करते हुए मेरा उद्बोधन पूर्ण करता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात। Thank you, sir, for your visionary and empowering words. As we approach the close of this inaugural ceremony, let us honor the distinguished ambassadors, high commissioners, and representatives from partner countries. I request our volunteers to escort the esteemed representatives to the dais for the felicitation. His Excellency and representative from the Republic of Guinea in India, His Excellency from the Republic of Botswana in India. I request the officials from the embassies to kindly take the exit from the exit gate on the right. His Excellency and representative from the Republic of Côte d'Ivoire in India. Representation from the Republic of Congo in India. His Excellency and representative from the Arab Republic of Egypt in India. Her Excellency from the Embassy of Seychelles in India. Representative from the Republic of Nauru in India.
representative from the Kingdom of Lesotho in India, His Excellency and representative from the Embassy of Uganda in India, representative from the US Embassy in India, and our representative from Sweden. A round of applause for our distinguished dignitaries. A loud round of applause for our guests from the other countries. Thank you, dear guests, for gracing this occasion with your presence. I invite the officials from partner countries to join our dignitaries on the dais for a group photograph. With this, we conclude the inaugural ceremony. Thank you for joining us and for your invaluable presence at this important event. I request everyone to rise for the national anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे